given us for the times, for having not lived a life that is worthy of becoming as the Lord is. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask that Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our trespasses, and bring us to life everlasting. Amen. Hymn number 79. Lord, have mercy on your servants gathered here. Lord, have mercy on your servants gathered here. We confess we have sinned in thoughts and words and deed. Lord, have mercy on your servants gathered here. Christ, have mercy on your servants gathered here. Christ, have mercy on your servants gathered here. We confess we have sinned in thoughts and words and deed. Christ, have mercy on your servants gathered here. Lord, have mercy on your servants gathered here. Lord, have mercy on your servants gathered here. We confess we have sinned in thoughts and words and deed. Lord, have mercy on your servants gathered here. Let us pray. Almighty and merciful God, may no earthly undertaking hinder those who set out in haste to meet your Son, but may our learning of heavenly wisdom gain us admittance to his company, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading, a reading from the book of Isaiah. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double of all her sins. A voice cried, the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of God, Lord, shall be revealed, and all flesh shall see it together. For the mouth of the Lord has spoken. Get up to a high mountain, O Zion, herald of good tidings. Lift up your voice with strength, O Jerusalem. Herald of good tidings, lift it up, fear not. Says to the cities of Judah, behold your God, behold the Lord God
comes with might, and his arm rules for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. The word of God. Thanks be to God. Your response shall be, let us see, O Lord, your mercy and give us your saving help. Let us see, O Lord, your mercy, and give us your saving help. I will hear what the Lord God has to say, a voice that speaks of peace, peace for his people. His people is near for those who fear him, and his glory will dwell in our land. Your response? Let us see, O Lord, your mercy, and give us your saving help. Mercy and faithfulness have met. Justice and peace have embraced. Faithfulness shall spring from the earth, and justice look down from heaven. Your response? Let us see, O Lord, your mercy, and give us your saving help. The Lord will make us prosper, and our earth shall yield its fruit. Justice shall march before him, and peace shall follow his steps. Your response? Let us see, O Lord, your mercy, and give us your saving help. दूसरा पाठ संत पतरस का दूसरा पत्र। प्यारे भाइयों, ये बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह अपने आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जल पर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जल पर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएगा। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की परीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to
hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, who shall prepare the way, the voice of one crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord, make his paths straight. John the Baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, and to all my parishioners who are sitting at home and participating in this online Holy Eucharistic celebration, and to all my beloved elderly parishioners, sick, the old, I wish you all God's blessings on the second Sunday of Advent, when we all have gathered here to remember everybody in our prayers. And for the past 1 week, we have been witnessing the agitation by the farmers for their rights to be heard by the government of the day. And they have tremendous amount of strength and willpower to be able to sustain in this cold weather, spending nights and days with all inconveniences, troubles, to achieve something which they think is their right. Negotiations are going on. They have one aim: to get their rights back, as well as to get their voices heard. Voices heard. The voice of the one who was crying in the wilderness,
We hear in the Gospel of Mark chapter 1 verses 1 to 8 talks about the voice of the one who is crying in the wilderness. I will explain little later now. And the Lord also speaks through the first reading taken from book of Isaiah chapter 40 verses 1 to 5, 9 to 11, and thus begins the word of the Lord. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem. Comfort my people. पिता परमेश्वर आइज़ाया नबी के द्वारा ये संदेश देते हैं, मेरे प्रिय जन को बताओ, मैं सांत्वना दूंगा, कभी अंधेरा में भटकने के लिए मौका नहीं दूंगा। मैंने ही अपने जनों को चुनाया और उनकी जो भी जरूरत है ये मेरा काम है। पिता परमेश्वर को उद्गत है। और ये जो सांत्वना जो शब्द हम बोलते हैं उसके बारे में मैंने कुछ रेफरेंसेस भी लिया है आज हमारी रिफ्लेक्शंस के लिए बाइबल से ही। और जो की बुक से अध्याय 5 11वीं वाक्य में हम ये सुनते हैं, The lowly he sets on high, and those who mourn are lifted to safety. और आइज़ाया की ग्रंथ में 41 चैप्टर वर्सेस 10 कि प्रभु कहते हैं घबराहट नहीं होना चाहिए, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। Don't be discouraged, for I am your God. निराशा में मत हो जाओ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. और जॉन की बुक से अध्याय 16 में ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, I have told you these things so that in me you may have peace. मुझ में आपको शांति है। In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. प्रभु खुद कहते हैं। और बहुत सारा है, समय नहीं है मुझे सबको समझाने में। और रोमन चैप्टर 15 में हम ये पढ़ते हैं, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति से आपके जीवन में पूर्णता हो, सांत्वना हो। क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और हिब्रूज में 13 चैप्टर में 5वीं वाक्य में हम ये सुनते हैं, आई विल नेवर लीव यू और forsake you. मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। पिता परमेश्वर की जो प्रॉमिस है, ऐसे प्रॉमिस प्रभु ने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। कभी भी उनकी प्रभु की प्रॉमिस में कमजोर नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और आजकल
हम जो खबर सुनते हैं, और कुछ भी मीडिया हो, सोशल मीडिया भी हो, प्रिंट मीडिया भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा खबर मिलता है हमें? कौन सा खबर मिलता है? बुरा खबर मिलता है, बुरा खबर मिलता है। सच्चाई का खबर कभी मिलती है? शांति की खबर कभी मिलती है? अगर ऐसे खबर 1 सेकंड 2 सेकंड दिखाएंगे, बस करोड़ किसान आज कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर से पैदल से आकर रास्ता में खड़े हैं और अपनी राइट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसके बारे में मीडिया कुछ भी नहीं बताती है, और उनके अंदर इतना शक्ति है और एकता है कि मां ने बेटा को बोल रहा कि जीत के आओ। ये जो जुलूस में निकलने के पहले मां बाप के पास जाके बेटा ने मां से आशीर्वाद लेने के लगे। मां बोल रही कि आशीर्वाद है कि आप जीत के आओ। And they have one aim. They will die even to get their rights back. The Lord also had a big battle to win over the corrupt regime of that particular time. The Lord had a tough time to deal with the corrupt regime of his time. They never allowed him to live in peace. He was targeting the one who was giving this kind of bad news even at that time. And so his good news, the gospel, was not accepted by the hard regime. I have a beautiful story to share with you. You remember, there was a person, Dr. Abulash, and he grew up in Palestine. He had a small home. Somehow he managed to complete the medicine. He became a doctor. He got an opportunity to serve in the hospital in Israel. Born in Palestine, Gaza Strip. But then he got an opportunity to serve the suffering at the hospital in Israel. And when he was serving, it was in the year 2019, his house was bombarded. He had 3 daughters. Besan, Mayar, and Aya. 21 years old, 15 years old, 13 years old. तीनों ही गुजर गई। और 2009 में उनकी पत्नी को कैंसर था। कैंसर में वो भी गुजर गई। जब इतना घटना हुआ, इतना दुख हुआ उनके परिवार में, तीनों बच्चे भी खत्म हो गए, घर भी नहीं है, बीवी भी नहीं है। उन्होंने रिवेंज की मेंटालिटी में कभी नहीं पहुंचा। ये सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक बुक लिखा, आई शैल नॉट हेट अ गाजा डॉक्टर्स जर्नी। यू गो टू गूगल्स, you will find this beautiful love story about this man, how he could cope up with this kind of tragedy and yet love, and yet gives comfort, and yet gives directions to the suffering humanity. And so when he was interviewed by the Vatican radio, he made a statement. He made a statement, when we all take responsibility and derive the energy of blaming others into internal energy to do something, to challenge the perpetrator and the blame,
then we can feel the energy to move forward. What a beautiful way. He channelizes negative energy into the positive energy of forgiving, into the positive energy of loving, into the positive energy of relating. And so he never took any kind of decision to hate the perpetrators of the crime. And so he made a trust. He made a society in the name of his wife and in the name of his 3 daughters. And that was, he made a society. And then education is the biggest weapon to face the injustices in this world. And I am sure women can meet the challenge. That is why Daughters for Life Foundation was established. Daughters for Life Foundation was established. There was a big write-up by the Times magazine, but no other media reported. No other media reported. And still, he gets enough funds to educate the orphaned girls. And he becomes a comforter. He becomes the comforter. He becomes the hope to the wounded. He becomes the reformer to the hurt. He becomes the blessed. He becomes the blessed to the wounded. And he doesn't mince words. He continues his mission of loving, forgiving, anointing, and healing. That is a ministry that he does it so beautifully. And that is a ministry that he learned from, he says, from my God who gave me the comfort. फ्रॉम मेरे ईश्वर से मुझे ये शक्ति मिला दूसरों को माफ करने का, दूसरों को शांति देने का और दूसरों को अपनाने लिए, अपने साथ रखने के लिए, दुख से मिटाने के लिए, दुख से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने ही मुझे चुनाया. इज अ मुस्लिम. इज अ मुस्लिम. माई गॉड हैज टॉट मी टू फॉरगिव. मेरे ईश्वर ने मुझे सिखाया कैसे दूसरों को माफ करना है, कैसे दूसरों को प्यार करना है. वही किया था पैलेस्टाइन में से. हमारा प्रभु का मिनिस्ट्री भी ज्यादा हुआ था. पैलेस्टाइन में से ही प्रभु का मिनिस्ट्री ज्यादा ही हुआ था. उनको भी इसी तरह का माइंडसेट को कन्फ्रंट करना पड़ा, लेकिन वो नेगेटिविटी में अपने आप को कभी नहीं ले गया, पॉजिटिविटी में ही ले गया था. ये पैंडेमिक से जैसे बार बार मैं बोलता हर इतवार को ये बोलना हमारा एक ब्लड रिलेशनशिप हो गया कोरोना से. ब्लड रिलेशनशिप हो गया कोरोना से. हम कभी भी किसी से नहीं डरते थे, लेकिन ऐसे डर रहे हैं आगे रिकवर होने के बाद भी उनके पास जाके हाथ मिलने के लिए, मुस्कुराने के लिए डर लगता है. डर लगता है. आई एम वेरी हैप्पी. Where is Justin? Justin was COVID positive. 3 days he was admitted. Came back home. Isolated himself for 2 weeks. He is back to the church. Stand up. We will just welcome him. We will welcome him to our parish community back again. God has healed you. God has brought you back. That is how God connects with you. Don't be frightened by anybody. You are frightened of this pandemic. You are not frightened of the God who loves you. You are not frightened of the sins you commit. You are not frightened of the injustice that you mete out to your neighbors. You are not frightened to speak calumny, words of calumny against the other. You are not frightened of the breaking of the relationship in which you indulge in. You are not frightened of the character assassination that you indulge in. You are not frightened of the gossiping in which you are gossiping and indulging all the time. You are not frightened of that. God will catch you. God will catch you. Catch you to reform you, not to frighten you. God will catch you to reform you, to love you, to forgive you,
to anoint you, to heal your brokenness. यही है हमारे ईश्वर। खुद कहते हैं कि मैं आपको शांत बना दूंगा। इसलिए वो ईश्वर को पिता परमेश्वर जीसस के रूप में दिया। खुद ईश्वर है। अगर उनकी वाणी को हम सुने, वाणी के अनुसार हम जिए, हम किसी से नहीं डर सकते। डरने की कोई मतलब ही नहीं होता। क्रिसमस आ रहा है और 2 हफ्ते। मेरा विश्वास है, मेरा उम्मीद है कि जिस दिन प्रभु का जन्म दिवस मनाएंगे, उस दिन जो सुविधाएं हम अभी कर रहे हैं लोगों को उस दिन आने के लिए देख लेते हैं कि कितने लोग आएंगे। मौका देने के बाद भी चर्च में नहीं आते हैं। मौका देने के बाद भी लोग चर्च में नहीं आते हैं। डरो मत, डरो मत। प्रभु हमारा है, जीवित प्रभु है, हम सबका मार्गदर्शन देने वाले प्रभु हैं। इसलिए जैसे प्रभु कहते हैं, क्राइस्ट द होली स्पिरिट, Christ love is manifested by his own spirit. We call it Holy Spirit. Christ's love is manifested through the Holy Spirit. Holy Spirit is nothing but the Spirit of the Lord himself, who gives us a comfort, who gives us the anointing, who gives us the power to be able to overcome any kind of evils in our lives, in our home. Forget about all kinds of confrontations. Confrontation is the attitude that you would indulge in. Today you ask for the forgiveness, like John asked for the forgiveness, asking for the baptism of repentance. When you repent for your sins, you are healed, remember. If you don't repent, you are doomed. If you repent, you are saved. If you are not repenting, you are doomed. Choose what you wish and choose what you live. खड़े हो जाइए। I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. may we place all our petitions at the feet of the Lord, asking for His blessings. हम सब कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा कलीसियाओं के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर ईश्वर की चुनी हुई प्रज्ञा का मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो हमेशा अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचते और काम करते हैं कि वे उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे पश्चाताप और मन परिवर्तन के माध्यम से प्रभु के पास लौटने के लिए आगमन काल का लाभ उठाएं।
ताकि वे यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव के आनंद में भाग लेने की योग्य बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें कि मसीह का आगमन आनंद और उल्लास से भर दे, ताकि सभी लोग एकता, भाईचारा तथा प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अपनी क्रिस्तीय उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हमारे पास पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के विश्वासी परिवारों के लिए हम प्रेरणा का स्तोत्र बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विशेष करके हम मिस्टर सनी जो बीमार हैं, ये सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस, may we pray to the Lord that the Lord may heal him. We also pray for our parishioners Thomas Varghese and Sheila, who are going to States to be with their daughter who is expecting her first baby. May we pray for Tessie for her good health, for the parents, that God may bless them. There are some parishioners who are affected with COVID-19, like John's family, John Swaminathan's family and other persons that we pray that God may heal them. They are all aged, that God may comfort them. Pray for the sick and the dying. Pray for the doctors and nurses who are putting their lives at risk by catering to the needs of the COVID-19 cases. Pray for the farmers, that there may be a settlement between the government and the farming community. Pray for ourselves, that we may repent for the sins that we have committed, that the Lord may bless each of us. God, our loving Father, we have placed all our needs at your feet. Hear our cries and bless each of us. And I make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. I give my hands to do your work, and Jesus, Lord, I give them willingly. I give my feet to go your way, and every step I shall take cheerfully. Oh, the joy of the Lord is my strength, my strength. Oh, the joy of the Lord is my help, my help. For the power of the Spirit is in my soul, and the joy of the Lord is my strength. I give my eyes to see the world and everyone in just the way you do. I give my tongue to speak your words, to spread your name and freedom giving truth. Oh, the joy of the Lord is my strength, my strength. Oh, the joy of the Lord is my help, my help. For the power of the Spirit is in my soul, and the joy of the Lord is my strength.
give my mind in every way, so that each thought I have will come from you. I give my spirit to you, O Lord, and every day my prayer will spring anew. Oh, the joy of the Lord is my strength, my strength. Oh, the joy of the Lord is my help, my help. For the power of the Spirit is in my soul, and the joy of the Lord is my strength. Pray, friends, so that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands, for the praise and the glory of his name, for our good and good of all this holy church. Be pleased, O Lord, with the humble prayers and offerings. And since we have no merits to plead our cause, come we pray to our rescue with the protection of your mercy. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him, with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy Lord God of power and might, holy creator of the world, heaven and earth their voices raise. Hosanna to the Lord Most High. Blessed and holy is the one who comes to spread the Father's word. Heaven and earth their voices raise. Hosanna to the Lord Most High. हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। Christ मर गए, Christ जी उठे, Christ महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझ जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता हम फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक रोजारियों की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। ये जो समय है पवित्र समय है। आपके जीवन में कुछ भी परेशान हो, ज़रूरत हो, प्रभु से आप दिल से मांग लीजिए। आपके परिवार में अगर कोई बीमार हो, आपके जीवन में ऐसे कुछ दिल में दर्द हो, प्रभु से दिल से दुआ कर लीजिए कि वो प्रभु सारे परेशान को दूर करें। आपके माँ बाप को याद करना, उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ कर लीजिए। और ये जो कोविड बीमारी से बहुत भाई बहन बुजुर्ग लोग पीड़ित हैं, उन सबको याद करो और प्रभु की चरणों में रखते हुए उनके लिए दिल से दुआ कर लीजिए कि प्रभु उनको जल्दी से जल्दी चंगाई दें। हमारे कलीसिया में जो भी बीमार हैं, गरीब हैं, उन सबको याद कर प्रभु से आप विश्वास के साथ मांग लीजिए। जो भी आपकी ज़रूरत थी परिवार में, अपने जीवन में, प्रभु सब पूरा कर दें। मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार जी सकूं। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित कन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा सुदिखान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। Amen. May we all sing the Lord's Prayer as the Lord taught us to call God Abba Father. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you.
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously granted peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, Take away the sins of the world. have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, the mighty God and the healing God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May this body and blood of the Lord bring me to life everlasting. दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सोई तकदीर जगाए
तू चुना बनाओ बनाए तू तेरी ये ज़मीं ये आसमान सबका है तू मेहरबान तेरी ये ज़मीं ये आसमान सबका है तू मेहरबान दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु कोई तुझसा देखा न कहीं सच है ये मेरे यीशु दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु कोई तुझसा देखा न कहीं सच है ये मेरे यीशु दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु कोई तुझसा देखा न कहीं सच है ये मेरे यीशु तेरी ही अमानत ये जिंदगी जिए जहाँ में खुशी खुशी तेरी ये ज़मीं ये आसमान सबका है तू मेहरबान तेरी ये ज़मीं ये आसमान सबका है तू मेहरबान दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु कोई तुझसा देखा न कहीं सच है ये मेरे यीशु तुझसा देखा न कहीं सच है ये मेरे यीशु सच है ये मेरे यीशु सच है ये मेरे यीशु Church notices, second Sunday of Advent. As the situation is still alarming with rises of COVID-19 cases, I request all my parishioners to be safe and follow the guidelines strictly. Depending on the government orders and improvement in the situation, we will invite different SCC units for physical participation in the Sunday Holy Mass and communicate the same accordingly. From coming Sunday onwards, you will be allocated the areas. So, as you receive the messages from the parish WhatsApp group in which all the communications are being passed on, kindly communicate the same to other friends who are not in the WhatsApp group. जो हर हफ्ते के लिए हमने जो WhatsApp ग्रुप बना कर रखा है उसमें सारे कम्युनिकेशंस वगैरह हम अपलोड कर रहे हैं और भेज रहे हैं, और जो लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको भी वो मैसेजेस को शेयर कर दीजिएगा।
आने वाले इतवार को अलग अलग एरिया को हम आइडेंटिफाई करके मैसेज भेजेंगे, उसी के अनुसार वो मैसेज के अनुसार आप लोग भी चर्च में आने के लिए कोशिश करना। We have a special meeting of pastoral parish council, SCC fund collectors and members of all associations today after the mass to plan mass for Christmas. The decision will be communicated through our parish website and WhatsApp group in the coming days. Kindly continue to attend the Sunday online mass by logging on to St. Thomas YouTube channel and log into parish website for communications regarding informations. Kindly continue to offer your donations and offerings to the parish bank account online. I request all the well-wishers and the benefactors to bring the rations to the church office for the distribution for the poor and the needy. And I have already sent a message regarding one aged couple in our parish who are migrating to their native place by the end of this month or in the beginning of January 2021. Kindly contribute whatever you can. They are aged, very old, but God has kept them safe without this pandemic. Particularly the man, Mr. George. I didn't want to take the name, but then that's how the Spirit tells you. He had a stroke. He had a stroke last month. And God has healed him. So we all will contribute whatever we could. You can give your contributions to the finance committee members sitting there or send online, and we will help the aged people to be settling down in their native place when they go. That will be the blessing during the season of Advent. Share the riches with the less fortunate. That is how we love the Lord, we love our neighbors. And Father Gio will be soon joining the parish community in the coming week. Is good and told him to be very strictly following the guidelines so that he is safe and others are safe, all of us are safe. And you also take precautions because in the cases are not yet over. It's still increasing. But then don't be frightened. As the Lord tells in the gospel, He will comfort you. So nothing to panic. घबराहट नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं, सब ठीक होगा, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप बुक ऑफ Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 12 पढ़ लीजिए. There is a time for everything. There is a time for everything. There is a time to love, there is a time to hug, there is a time to embrace, there is a time to laugh, there is a time to smile, there is a time for healing. प्रभु खुद कहते हैं हर चीज के लिए समय होती है, समय पर सब कुछ ठीक होगा. हमारा विश्वास है, आपका विश्वास है. और आई वुड लाइक टू warmly welcome our two new members who have come to the church. Ritika Stanley. Who is Ritika? Yes, and Veronica De Rosario. So they have come for a particular work. They are all administrators working in the school. They come for some work. When I asked them when they came, you are new, I have never seen you. They said they are here to attend the service. We warmly welcome you. Yeah. May God bless you. So if anyone is sick in our parish, and if anyone is sick in your knowledge, whom you know, please send the intimations to me so that my job is to pray with love. कोई भी आपके परिवार में और कोई भी आपके एरिया में, समाज में, कलिसिया में बीमार हो, उनका नाम, डिटेल्स, वो ये ग्रुप तो हैं, अपना अपना एरिया एसीसी कोऑर्डिनेटर्स को भेजिए, वो मुझे इंटीमेट करेंगे ताकि मैं आप सबको अपना प्रार्थना में याद कर सकता हूँ. प्रभु के दया के लिए आपके लिए दया भी मिलेगी ज़रूर. इसलिए आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो. खड़े हो जाइए. हमने प्रभु के शरीर को स्वीकार किया है. प्रभु को धन्यवाद है. प्रभु ने बहुत लोगों को चंगाई किया, उसके लिए मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद है.
आपके परिवार में सुख शांति है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु ने बहुत कुछ आशीर्वाद से आपके परिवार को बढ़ाया है, नया जीवन दिया है, सांत्वना दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद है। कुछ भी परेशान हो आपके जीवन में और परिवार के जीवन में, प्रभु से विश्वास के साथ नाम लेकर बुलाइए कि प्रभु की इसको दूर करें। जो चंगाई आपके लिए प्रभु ने किया उसको भी आप दिल से प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं सुरक्षित रहूं, कलीसिया की लोगों को पूरी दिल से सेवा कर सकूं। जो मेरे साथ काम करने वाले जो भाई बहन हैं, टीम हैं, को टीम मेंबर्स हैं, उनके लिए भी दुआ करना कि और बड़ी विश्वास के साथ कलीसिया के लिए सेवा कर सकते हैं। और जो हमारा भाई बहन जो हर इतवार को आके सेवा करते हैं, क्वायर में बहुत अच्छे प्रभु के नाम लेके पुकारते हैं, गाना गाते हैं, उसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा यूथ ग्रुप बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी कलीसिया के जीवन में भाग लें और सेवा करें। God, our loving Father, we thank you. We thank you for this message that you give to us today, that you are in our midst to comfort each of us, that you are in our midst to remove all kinds of darkness from each of us, that you are in our midst to dispel the doubts and to bring to light the hope that we desire to be with you. We thank you for the right directions in life that you have shown us. We thank you for this parish community who is zealously with zeal working for your glory. We thank you for the people whom you have chosen to work for you. We thank for all the children of our parish, that they may enjoy the best of health in mind and body. We pray for all the SCC leaders, that they may be motivated to be able to give their time and energy for the well-being of the parish community. We thank you, Lord, from our hearts. Bless each of us. And I make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Queen of Peace and Channel of all graces, Pray for us. I request all the committee members to be remaining seated in the church after the final hymn. Don't go out because we have a meeting immediately. Have a lovely weekend. God bless and have a wonderful time in the evening. Thank you. Rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss is the secret of His bliss, that the Comforter abides in me. He abides, He abides, all
Hallelujah, He abides in me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides in me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and the King of peace so sweet, now the Comforter abides in me. He abides, He abides, He abides, He abides. Hallelujah, He abides in me. He abides, He abides, He abides, He abides. Hallelujah, He abides in me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides in me.